नमस्ते, मैं हूं कोमल भारद्वाज। इस वक्त मैं दुनिया की सेकंड बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में हूं। भारत के लिए ये गौरव का पल है कि बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है। किस जोश और जुनून के साथ पैराग्लाइडर्स यहां पर उड़ान भर रहे हैं, चलिए देखते हैं। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले की आज शुरुआत हुई है। वर्ल्ड कप के पहले दिन पैराग्लाइडर्स ने उड़ान से पहले कमर कसी और उड़ान से पहले पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप मैनेजमेंट की तरफ से प्रतिभागियों के लिए खेल के नियमों की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। I will explain the task later on. First, few changes that are important while you are still focused. First important change today is we changed the frequency, the safety frequency, because there's too much of noise on the other one. 144-700. Please, as I explained yesterday, you should fly on this frequency. Please respect this rule. It's very important that someone from the air can contact the staff or me, or I am able to contact someone in the air. So please fly with your radios tuned on 144-700. The second very important thing today is we are turning to the left. So it's a 3rd of November. So on the even and odd days, we fly different direction. Today we have an odd day, which is 3rd, and we will fly to the left. 3rd, 5th, 7th, we fly to the left. On the even days, 2nd, 4th, 6th, we will fly to the right. So this left turn is mandatory up to this point, which is the start gate. In the start gate, also it's mandatory to turn left. Don't forget, it's very important. You go to the start gate and then it's mandatory to turn left. Why? Because this task is going there and out. So it's basically going to each other. It's very important to know where the guy in front of you will turn. Respect this rule. So from the takeoff point to the entering of the start gate, and in the start gate we turn to the left. Okay? The second question today, interesting in the beginning, was is it exit or enter? In modern instruments, in the exit track or whatever you're using, it's not important. The crossing of the line is important, because in this particular case, when you enter into B12, it's enter. When you go out, it's exit. So it doesn't matter. In order to verify the turn point, you have to do one or another. So don't bother with this. It's completely the same. The next important thing for today, I mentioned yesterday the reasons for this, is the helicopter availability and all this safety related issue. Task deadline will be at 16:30. I put it here. So task deadline is 16:30. If you're still in the air, which is not likely to happen, but if you're still in the air, after that you can go directly to goal, or you can land, because you are not getting any more points. It's pointless to struggle or to risk. After 4:30, the task is basically kind of finished, and you can safely land somewhere or come to the goal without any stress. So if it's more convenient for you, but don't push. There is no racing anymore. It's finished. Okay. So now, any questions? Where is the launch? Okay. Yes. Good question. So I was advised that if we are having this wind, which is east wind in the moment, we should stay here, which means this launch just over us. We will remove this stuff so you can use this place, and we will try to stay here. We will start fairly soon. In 15 minutes we would like to start, or maybe even 10, something like this. So regarding this, if somebody is ready, he can go immediately after the briefing. So you do not need to wait. I will set some different timings here. This is only for mathematics, only for calculation of the time. So if you are ready, you can go now, after this briefing. Yeah, but the open time. Yes, open time, that's what I'm saying. If open time is, for example, let's say 12, you can go now, regardless of this, yes.
It's not going to make any difference, big difference. Okay. In the same line. Okay, so the proposal is to make B27 the last. So the proposal is to change B27 to be the end of speed section. That's what I think. Just erase it, but the belly is working mostly in the... Yeah, that time. It's And not there the are point, options guys. to We need land. to remember we're racing. Some people will be on the bar, close to the ground, because it's the end of speed and we're going to go. So we're not going to be at... Distance will not change, nothing will change, we can do it easily. Okay, I agree. We do it, we will do this. So there is a change of the task, please be careful. We are erasing end of speed section. So, two more informations, just a second. So, first one, so as Daniel just said, you can just, you cannot make mistake because the task itself will not change. So the distance is the same, optimized, everything is the same. End of speed section now is B27, nothing is changed in the radius of cylinders, whatever. The second important thing is it was also brought to me by the locals. There are cases when there is tactical advantage for the people going in the back of the mountain. So this is not allowed. So this is not allowed. You cannot take off early and go deep in the mountain in the back, climb stratospheric and then come to back. The border, they told me, is the river. So there is river on the back side. So you cannot go past the river. When you climb, you have to be careful not to pass the river. It's considered as an airspace. So if you are past the river, you will be penalized as an airspace violation. जिसके बाद पैराग्लाइडर्स ने अपने बुलंद हौसलों के साथ उड़ान भरी। बिलिंग में आयोजित पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के पहले दिन प्रतिभागियों को एरियल डिस्टेंस के हिसाब से 68 किलोमीटर और लोकेशन के हिसाब से 93 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया गया था। Well, it is one of the best places in the world for paragliding. It's very famous, and especially in Asian part of the world. But well, huge amount of pilots from Europe also coming here to enjoy long cross-country flights and well, food, nature, and welcoming of local well, people, and so I'm very glad to be here. प्रतिभागियों को बिलिंग से संसार तक 5 किलोमीटर का, संसार से घटासनी तक का 11 किलोमीटर का, घटासनी से कंडवारी का 26 किलोमीटर का, कंडवारी से चेना पास का 25 किलोमीटर, चेना पास से अहजू का 5 किलोमीटर और अहजू से लैंडिंग साइट का 3 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया था। In India, it's a very welcome country with amazing food, with amazing places, and it's awesome that I'm here. Like I didn't even imagine that India is so beautiful, and even this place where it's amazing with these big mountains, Himalayas. Here it's my first time, and previously I flied in Latin America. And also in Alps and in Caucasus in Russia, like mostly like this. प्रतियोगिता के पहले दिन 23 देश के 72 प्रतिभागियों ने उड़ान भरी। शाम तक पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग हुई और इसी तरह पैराग्लाइडिंग का पहला मुकाबला रोमांचक रहा। आज पैराग्लाइडिंग विश्व कप का पहला टास्क डे था। आज जो यहाँ पे टास्क कमेटी द्वारा
68.4 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस का टास्क प्रतिभागियों को दिया गया था, जो कि लोकेशन वाइज डिस्टेंस 93 किलोमीटर था। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो हमारे हेडक्वार्टर से GPS PWC से लगभग जो 72 पार्टिसिपेंट ने आज पार्टिसिपेट किया, जो क्वालिफाई किया आज के इवेंट को, और ये लगभग 24 कंट्रीज़ के लोगों ने आज के टास्क में हिस्सा लिया। आज का जो रिज़ल्ट है, पहले मैं आपको टास्क के बारे में बताऊंगा, उसके बाद रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगा। जो टास्क था, बिलिंग से लेकर संसाल तक 5 किलोमीटर, फिर संसाल से लेकर घटासनी तक 12 किलोमीटर, घटासनी से लेकर कंडवाड़ी तक 26 किलोमीटर, कंडवाड़ी से चाइना पास तक 2.5 किलोमीटर, और संसाल से लेके आपका एहजू तक 5 किलोमीटर, एहजू से लैंडिंग तक 3 किलोमीटर, जो कि एक बहुत ट्रिकी जो आज का टास्क दिया गया था। जो हमारा कंपटीशन है, जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसका आज पहला दिन है। तो अभी कंडीशन में भी स्टेबल है थोड़ी ज़्यादा एंड पे। बाकी कई सारे कंट्रीज़ के पायलट्स आ रखे हैं, तो होपफुली कंपटीशन अच्छा होगा। ये बहुत सारी चुनौतियों का करना पड़ा। ये हमें सामना जी यहाँ पे खुशकिस्मत ये है कि हमारे पास में बीर बिलिंग है, मनाली जैसी साइटें हैं, और उसमें हम लोग अपनी जो टेंडम एक्टिविटीज़ करके अपना घर का पालन पोषण और सभी कर रहे हैं। साथ में हमें कंपटीशन करने के लिए, क्योंकि इक्विपमेंट्स महंगे होने के कारण, हम लोग ये भी प्रोवाइड करवा पाने में सक्षम हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी फिर भी दिक्कत हमें आ रही है। जैसे हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, बाकी देशों में जो है काफ़ी अच्छा ये फैसिलिटीज़ है कॉम्पिटिटर पायलट्स के लिए। अगर यहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट पायलट्स को थोड़ा सा अगर ये करे, जो वर्ल्ड कप कंपटीशन बहुत सारे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं अभी इंडिया में और हिमाचल में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर इक्विपमेंट्स का भी या हमें जैसे फीस का है अगर थोड़ा सा रहे तो। खेल में हार और जीत के परिणाम मायने नहीं रखते हैं, महत्वपूर्ण है खिलाड़ियों का संघर्ष और प्रयास। इसी संघर्ष और प्रयास के साथ बीर बिलिंग में पैराग्लाइडर्स ने उड़ान भर ली है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का ये रोमांचक मुकाबला चल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे दिन ये मुकाबला यहाँ पर रहता है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 के इस भाग के प्रायोजक है हिमाचल टूरिज्म और काया एंटरटेनमेंट। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को।
आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार। सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग 2024 का ये मुकाबला चल रहा है। बाकी की अपडेट देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। This is my first time here in Bir Billing. General, my first time in India. We had some flights yesterday already and the day before, and I really like this place. It's a beautiful place. It's kind of like the Alps, so it has similar components in the air. There are a lot of pilots here, and I'm really happy to be here and to compete with the others. And I wish us all a great competition. You know, India and this destination is very attractive for us, for the World Cup Association, and for the paragliding in general, because what we have now here is the best period of the year for flying locally, but the worst worldwide. So it's like a gathering point of all paragliding pilots. So to see this, it's always more than welcome. You know, it's a very good feeling, because in these days, that's why we are here, is the center of paragliding worldwide. There are different standards for different level of events. This place is beauty of nature, and it has all the potential. But the days when we use this kind of unprepared, let's say, natural takeoffs is long gone. So on one hand, it's fantastic place because it's gift of nature, as I said. But on the other hand, it needs much more infrastructure in order to become a really World Cup competition destination. More takeoffs, shade, more facilities, constant internet, mobile network coverage, many other things. But as a natural potential, it's absolutely fantastic. You know, paragliding is a very wide sport. So as a hobby, limitations are not so strict, because there are many ways how you can do it. So basically, taking into account that you are flying, and flying by default is bringing some risk, it's really important to position yourself where you belong. For example, for us that are at the competition level, that assumes that you are already good enough to be competitor. Of course, risk is very high, in a way. It's not popular to say, but that's fact, because you are pushing yourself. In any sport, when you're pushing yourself, you have certain risk. But in a way, if you are doing it as a hobby, just for fun, just to see how it is, or when you're in a decent school, when you are in some good control, that means that the limits are very small. You can be a kid, you can be fairly old. For example, there are many people flying at the age of 65, 70, which is fascinating for any sport. But this is nothing to do with high level. This is just basic fun. पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के पहले दिन यूएस के
ऑस्टिन कॉस्क 1000 अंक लेकर पहले स्थान पर चल रहे हैं। पोलैंड के डोमिनिक कैपिका 861 अंक के साथ दूसरे स्थान पर चल रहे हैं और हंगरी के बेस हेल्स 858 अंक लेकर तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। महिला वर्ग में पोलैंड की जॉन कॉट 724 अंक के साथ पहले स्थान पर, ब्राजील की मरीना ओलेंक्सिन 372 अंक के साथ दूसरे स्थान पर और जर्मनी की दरिया एल्ते क्लब 370 अंक के साथ तीसरे स्थान पर चल रही है। आज का जो रिज़ल्ट है वो PWC की साइट पे भी आ गया है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा जो फर्स्ट नंबर पे ऑस्टिन कॉक्स जो USA के प्रतिभागी हैं 1000 पॉइंट लेके नंबर 1 पे रहे हैं। दूसरी पोजीशन पे डोमिनिक कैपिवा पोलैंड से जो हमारे पैराग्लाइडर पायलट हैं 861.4 अंक लेके दूसरे नंबर पे रहे हैं। नंबर 3 पे हंगरी के बेंस होलार्ज 858.5 पॉइंट लेके तीसरे नंबर पे रहे हैं। और मैं बात करना चाहूँगा महिला प्रतिभागियों को जिनके लिए भी सेम टास्क सेट किया गया था टास्क कमेटी द्वारा। तो फीमेल पायलट में नंबर 1 पे जोना कोकोट पोलैंड से 724.8 मार्क्स लेके नंबर 1 पोजीशन पे रही हैं। नंबर 2 पे ब्राज़ील की मैरिना ओलेक्सिना 372.6 मार्क्स लेके नंबर 2 पे रहे हैं। नंबर 3 पे दारिया एल्टेकोबा जर्मनी की 370.5 मार्क्स लेके नंबर 3 पे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे जितने प्रतिभागी से सारे सेफली लैंड कर चुके हैं उनका जो कहीं अपने जो डेस्टिनेशन पूरी नहीं कर पाए, टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए, उनको रिट्रीव कर लिया है। एक माइनर सी टेको पे माइनर इंजरी जो एक स्प्रेन थी, उसके बाद जो सारे पायलट हमारे सेफली लैंड कर चुके हैं। डे 1 था वर्ल्ड कप का और काफ़ी अच्छा था। कंडीशंस थोड़ा स्टेबल थी, इतना ज़्यादा हाइट नहीं जा पा रहे थे, बट काफ़ी अच्छा था आज का टास्क और काफ़ी एडवेंचरस रहा। बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में इंडिया में ही हो रहा है और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज का तो सही था, टास्क भी अच्छा था, पर थोड़ा चैलेंज तो काफ़ी कंडीशन के हिसाब से था। अगर कंडीशन अच्छी है तो फिर उतना दिक्कत नहीं होता ना, अगर कंडीशन वीक है तो फिर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
I've been competing now for just a few years, 2 to 3 years, but this is my third time to Bir, and it's a beautiful place. And when I heard there was another competition here this year in 2024, I decided this would be the perfect time to come back and visit the city. Beautiful place, beautiful mountains, great place to fly. I enjoy every visit I have in this beautiful village. Up and below, the waterfalls, the temple is great. And the race is so well organized, and I'm looking forward to another week of race here. बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का पहला दिन काफ़ी रोमांचक रहा। इसी तरह के आगे भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।